अच्छा, कसीदा ग्रुप कौन है? माहिदा, आफिया की बहन की बड़ी बहन तुम्हारी चली गई बड़ी लजना में? नहीं, वो इधर बैठी है। अब वो इधर बैठी। अच्छा, ये है। या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफानी यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मआनी या बहर फज़्लिल मुन्इमिल मन्नानी तहवी इलैकल ज़ुमरु बिल किज़ानी या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी कौमुन रअौका व उम्मतुन कद उख़बिरत मिन ज़ालिकल बदरिल्लज़ी असबानी या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी यबकून मिन ज़िक्रिल जमाली सबाबतन व तअल्लुमन मिन लुग़तिल हिजरानी वअरल क़ुलूब लदल हनाजिरि कुर्बतन वअरल ग़ुरूब तुसीलुहल ऐनानी या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी या मन गदा फी नूरिही व ज़ियाइही कन्नैयरैनि व नव्वरल मलवानी या बदरना या आयतर रहमानी अहदल हुदाति व अश्शुजानी या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन सानी। किस किस को कितना कसीदा याद है? 20 शेर किसको याद है? आधा किसको याद है? पूरा किसको याद है? 10 शेर किसको याद है? जिनको पूरा याद है वो भी बीच में शामिल हैं, वो भी हाथ खड़ा करें। यही उम्र याद करने की, कर लो। इरशादात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, साहिमा मकसूद साहिबा। इरशादात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा बयान मसीह मौऊद की निस्बत, जिसकी आसमान से उतरने और दोबारा दुनिया में आने की इंतज़ार की जाती है, जैसा कि खुदा ताला ने अपने फज़ल व करम से मेरे पर खोल दिया है,
ये है कि मसीह के दोबारा दुनिया में आने का कुरान शरीफ में कहीं जिक्र नहीं। कुरान शरीफ तो हमेशा के लिए उसको दुनिया से रुखसत करता है। अलबत्ता बाज़ हदीसों में जो इस्तारात से पुर हैं, मसीह के दोबारा दुनिया में आने के लिए बतौर पेश कोई बयान किया गया है। सो इन हदीसों के सियाक़ो सबाक़ से ज़ाहिर है कि इस जगह दर हकीकत मसीह इब्ने मरियम का ही दोबारा आ जाना हरगिज़ मुराद नहीं है, बल्कि ये एक लतीफ़ इस्तारा है जिससे मुराद ये है कि किसी ऐसे ज़माने में जो मसीह इब्ने मरियम के ज़माने का हम रंग होगा, और जैसा कि मसीह इब्ने मरियम ने हज़रत मूसा के दीन की तजदीद की और वो हकीकत और मग़ज़ तौरात का जिसको यहूदी लोग भूल गए थे उन पर दोबारा खोल दिया, ऐसा ही वो मसीह सानी मसीह मूसा के दीन की जो जनाब ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तजदीद करेगा। और ये मसीह मूसा का मसीह अपनी सवानह में और दूसरे तमाम नताइज में जो कौम पर इनकी इताअत या इनकी सरकशी की हालत में मौसर होंगे, उस मसीह से बिल्कुल मुशाबे होगा जो मूसा को दिया गया था। अब जो अमर के खुदा ताला ने मेरे पर मुनकशिफ किया है वो ये है कि मसीह मौद मैं ही हूँ। अज़ाला हम सफ़ा 61। तर्जुमा तुमने लिखा हो कसीदे का, पढ़वा भी देना था। अच्छा किया उन्होंने, पढ़ भी देते तो समझ भी आ जाती इनको। जी, कफन मसीह, श्राउड ऑफ टूरिन, मायदा आफिया। कौन सी है मायदा आफिया? तुम नहीं हो? मैं ही हुजूर, लेकिन पहले आफिया करेगी। अच्छा, कहाँ है आफिया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुम्हारी बहन क्या नाम है? माफिया? नुमाना। नुमाना। अच्छा। कफन मसीह. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb cut out of rock. ऐसा पढ़ो ना, को समझ भी आए। तुम इनको तो आ जाएगी, शायद सुनने वालों को भी आ जाए टीवी पे। So Joseph मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंचती ठीक तरह। So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb cut out of rock. Mark 15:46. ये वो कपड़ा है जिसके बारे में ये सोचा जाता है कि ये हज़रत ईसा मसीह का कफ़न है। ये कफ़न तुरिन इटली में 400 सालों से महफूज है। अब एक वीडियो एमटी वालों की वीडियो थी, एक डॉक्यूमेंट्री। For over 2,000 years, the linen relic, believed to be the burial shroud of Jesus of Nazareth, has been traced across empires through history. It wasn't until 1898 when a remarkable discovery was made, when the linen shroud was photographed for the first time. The negative of the photograph revealed the image of a man with a clear, impressive and majestic countenance. It was Jesus of Nazareth. The anatomical accuracy of the blood flows and injuries have astounded researchers and made it even harder for people to believe it a work of a forger, especially because the photographic image of a negative character that it bears was already impressed on it many centuries before the difference between negative and positive was discovered. Another proof of the shroud's authenticity is the remarkable resemblance between the biblical accounts of the events of the crucifixion and the impressions on the shroud. So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head. Large trickles of blood can be seen around the forehead and scalp, which resulted from the thorns that were placed on his head. The hands were not pierced through the palms, as usually depicted in medieval art, but through the wrists.
the only suitable place to support the weight of a body. Another remarkable fact is that the hand shows only 4 fingers as the thumb bends brusquely. According to medical experts, this was a direct result of a nail in the wrist and is consistent with this trauma. But when they came to Jesus and found him already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. According to the Gospel of John, the image in the shroud shows neither of the legs being fractured, as they are seen intact. There are, however, scores of linear wounds on the torso and legs. These wounds are consistent with the distinctive dumbbell wounds of a Roman flagrum. There are also large puncture wounds in the feet, as if pierced by a single spike. The large bloodstain on the chest is also consistent with biblical descriptions. The heart's activity is sufficiently proved by the bleeding. This is a critical piece of evidence of his survival. Streams of blood can be seen down both arms. The blood drippings from the main flow occurred in response to gravity at an angle that would occur during crucifixion. There are 2 dark parallel lines caused by the fire of 1532 in the Sainte-Chapelle of Chambly in France, where the shroud was kept. These lines run lengthways and are intersected by 29 roughly triangular holes surrounded by scorch marks. In addition, there are marks left by the water used to put out the fire in 1532 and on other occasions. Another proof linking the shroud to Jesus are the tests on the pollens identified on the shroud, confirming the supposition that it has passed through the regions of Palestine and the Middle East. The studies and scientific research that have been carried out on the shroud for nearly a century prove that the warmth of the body, in conjunction with other chemico-physical reactions due to the aloe impregnation, produce a negative imprint of the body, the snapshot, which has preserved the details of Jesus' crucifixion for posterity. The imprints on the shroud not only bear the image of a man who appears to have suffered physical trauma in a manner consistent with crucifixion, but also consistent with the biblical accounts of the torture of Jesus.